वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मंथली फेवरेट्स फॉर द मंथ ऑफ मई। मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किया है या ऐप यूज़ किया है या अप्लायंसेस यूज़ किया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है फॉर द मंथ ऑफ मई। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू एंड मच रैम्बलिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने रिसेंटली कुछ शॉपिंग किया है हांगकांग में क्लोथ्स के, और दिस इज वन अमंग्स देम। इसका भी एक बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो मूविंग राइट अलोंग, द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू शो यू फॉर द मंथ ऑफ मे दैट आई हैव बीन लविंग लेटली इज द बैग दैट आई हैव बीन कैरिंग. So this is the bag that I love. I don't know, I have showed this bag on so many videos, you know. I love this color. I love this, you know, gunmetal का जो strap है. I love it. ये बहुत ही क्यूट लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. इट मैचेस ऑलमोस्ट ऑल माई आउटफिट्स. ये तो कॉन्ट्रास्ट में जाता है, बहुत ही क्यूट लगता है. The hair product that I have been loving lately for the month of May is Elsive by L'Oreal Paris. This is an hair serum. बहुत ही कम यूज करना पड़ता है. ये कॉइन साइज ही लगता है, just few drops like so. और इसको पहले आप हाथ में अच्छे से रब कर लीजिए, उसके बाद अपने हेयर पे डाल दीजिए. कोई भी हीट से अच्छा प्रोटेक्शन देगा ऐसे ये सीरम. नेक्स्ट जो आइटम है वो है एक्सेसरी. आई लव टू एक्सेसराइज एंड द बेस्ट एक्सेसरी अ गर्ल कैन कैरी ऑल द टाइम इज हर कॉन्फिडेंस एंड हर स्माइल. हाउएवर, उसके अलावा अगर कुछ फिजिकल आइटम्स में जाए लाइक ज्वेलरी, फिंगर रिंग्स, ईयररिंग्स, तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन लविंग. दिस इज फ्रॉम माय ओन इंस्टाग्राम स्टोर and from my own jewelry line, and this is something that I have been loving. ये बहुत ही क्यूट है और कोई भी सॉलिड कलर के ड्रेस के साथ ये बहुत ही अलग सा डेफिनेशन देता है. So this is something I have been loving lately. I am someone who loves to smell good all the time, and I keep reapplying perfumes or body mist so that I always smell good. So the perfume of the month is this one. This is called She Is Mine. ये मैंने खरीदा था जर्मनी से. I think I purchased this at Frankfurt airport. Let me score a few. I just love the smell. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये मैंने बहुत सारे ब्यूटी गुरुज को अपने वीडियो में शोकेस करते हुए देखा है, लेकिन आई हैव नेवर परचेज्ड इट फॉर माई सेल्फ. लेकिन इस बार आई सॉ दिस स्टोर बेनिफिट का हांगकांग में, एंड आई हैड टू गेट इट फॉर माई सेल्फ. दिस इज फ्लोरा टिंट बाय बेनिफिट. So this is a tint like it says, और ऐसा टोफू एप्लीकेटर आता है, and this is like a cheek and your lip tint. So आप ऐसे लगा के इसको ब्लेंड कर सकते हैं अपने चीक्स के ऊपर and also on your lips. It will give you a very natural looking pink color, and I absolutely love this product. Please go ahead and purchase this. One product आपके बहुत सारे यूज में आएगा. You can use it as a lipstick, you can also use it as a cheek tint. Next जो item है ये तो मैं हमेशा यूज करती हूँ, not only for the month of May, but I've been using it from the day I have purchased this. This is my Jade Roller, and ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए. Keep it in a cool place, और जब भी टाइम मिले ऐसे रोल कीजिए. आपके जितने सारे फाइन लाइंस है फेस में
सब चले जाएंगे। एंड इसका जो ठंडा सा एक जेड का इफेक्ट होता है, ये आपके स्किन को टाइटनिंग करने के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो दिस इज द जेड रोलर दैट आई हैव परचेज्ड एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। For the month of May, I've been using a gadget that I've been loving lately. ये बहुत दिनों से मेरे घर पे था लेकिन यूज नहीं कर पाई अब because I was extremely busy for the last couple of months. ये गैजेट मेरे को बहुत ही हेल्प किया to rejuvenate my energy. So this is a speaker. So I was using this equipment for listening to music and also to podcast. I was pairing it through Bluetooth with my phone and absolutely lifesaver. और ऐप ऑफ द मंथ है फूड पांडा, जैसे कि आप देख सकते हैं। दिस इज द ऐप दैट आई बीन लविंग लेटली, क्योंकि फॉर द मंथ ऑफ मे आई वाज क्वाइट बिजी और मैं घर पे खाना पका नहीं पाई हूँ, इसीलिए आई वॉज ऑर्डरिंग फूड। और ये ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। बहुत सारे क्विजीन्स मिलते हैं जैसे इंडियन, वियतनामीज, देन ब्रिटिश, एशियन, इटालियन, अमेरिकन, और आप डिफरेंट क्विजीन ऑर्डर कर सकते हैं। दे विल ऑर्डर डिलीवर द फूड इन नो टाइम। सो आई हैव बीन लविंग दिस ऐप एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड I must say I was not disappointed. So this is the app that I have been using for the month of May. And this is the game that I have been loving lately. It's called Covet. Like you can see, it's a Covet fashion game. So you can dress up any of your models, send them for a rally, and in turn you get prizes and everything. और ये मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है। लाइक यू कैन सी, ऐसे यू कैन ओपन देम और आपको रेटिंग्स मिल जाएगा इधर। और ऐसे आप ड्रेस अप कर सकते हैं। यू शुड डाउनलोड दिस गेम एंड ट्राई फॉर योरसेल्फ। मुझे अगर आपको फैशन पसंद है तो आपको ऐसे वाले गेम्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। वंस अगेन द नेम ऑफ द गेम इज कवेट फैशन। Go ahead and try this. This is the game of the month. So, these are all the things that I've been loving for the month of May. I hope you liked it, and if you did, please do not forget to like, comment, share, and subscribe to my channel down below. Also, do not forget to hit the bell notification so that every time I upload a video, you are notified. And I'll see you on my next one. Until then, take care of yourself, take care of your family, be positive, spread positivity, and until next time, may the odds be ever in your favor. Goodbye.